Morning children, welcome to the social session. We were learning about the abolition of Zamindari system in our previous session, and we have learnt about the abolition of Jagirdari system in Telangana region. So under that we have learnt that the survey caste got abolished, the Kudkasht got abolished through a farman sent by the Raj Pramukh, through a farman sent by the Nizam, that was in the position of Raj Pramukh. And he also abolished the forced labor like vetti, which was practiced in the Telangana region. So it was decided that as per the Hyderabad Jagirdar Abolition Act, large Jagirs were taken over by the government within a few days, and 18 crores was decided as a compensation which was to be paid due to this act. Nearly 995 Jagirs, Jagir बोले तो land, और उसका ओनर जो है, उस ओनर बोले तो जो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने वाला जो है वो जागीरदार था. सो दिस पर्सन गॉट कॉम्पनसेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव डिसाइडेड इट एज 18 crores. सो मेनी ऑफ द जागीरदार्स वर रिमूव्ड एंड लैंड वाज गिवन टू द फार्मर्स हु वर कल्टिवेटिंग इट. जो लोग उसको कल्टिवेट कर रहा था उन लोगों को ही ओनरशिप राइट्स दे दिए थे. And further, there was a reduction even in the land tax also, because the independent government wanted to help the farmers and the poor farmers especially. Most of the people in the country were poor farmers or either landless people. For that reason, in order to help them, the land tax was reduced by the government. The new government appointed a committee also called as Hyderabad Agrarian Reforms Committee. The purpose of this committee was Hyderabad Agrarian Reforms Committee. इसका नाम जो है हैदराबाद अग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी. अग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर. हैदराबाद के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बोले सो चेंजेस, एग्रीकल्चरल चेंजेस को पढ़ने के लिए एक कमिटी को अपॉइंट कराए थे गवर्नमेंट. सो उसका नाम था हैदराबाद अग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी. सो दिस कमिटी विल लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ लैंड कॉन्सेंट्रेशन, किसके पास कितना लैंड है पढ़ने के लिए कमिटी डाले थे, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, उसके ऊपर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना, एंड आल्सो इट आल्सो यूज टू स्टडी द एस्पिरेशंस ऑफ द फार्मर्स एंड टेनेंट्स अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम. अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था एबॉलिशन ऑफ जागीरदारी सिस्टम निकाल देने के बाद जिन लोगों को ये लैंड जिन लोगों को लैंड मिला था वही ऐसे ही सिस्टम कंटिन्यू करे तो कैसे रहती, फ़ायदा गवर्नमेंट को कैसे रहती और पूर पीपल को कैसे रहती, ये पूरा पढ़ने के लिए एक कमिटी डाले थे. उसका नाम था हैदराबाद एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी. एंड द कमिटी मेड फार रीचिंग रिकमेंडेशंस. एक कमिटी पूरा पढ़ के इट हैज़ मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस. क्या बोल के, लाइक रिमूवल ऑफ द मिडिल मैन. ओके, गवर्नमेंट और टिलर के बीच में जो भी मिडिल मैन है उन लोगों को निकाल देने के लिए बोला था. और सीलिंग ऑन द लैंड ओनरशिप एक्ट, सीलिंग ऑन द लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप के ऊपर सीलिंग बोले तो एक को इतना ही लैंड रहना, ज़्यादा रहे तो गवर्नमेंट ले लेती बोल के एक रिकमेंडेशन भी दिया था. एंड टेकिंग अवे द सरप्लस लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड प्रोटेक्शन टू द टेनेंट्स वाज आल्सो देयर. टेनेंट्स बोले तो किराएदार, उसको प्रोटेक्ट करना, एविक्ट नहीं कर सकता, वैसे टेनेंट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए भी थोड़े रिकमेंडेशंस दिए थे. सो द रिकमेंडेशंस मेड बाय द हैदराबाद अग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी वाज, फर्स्ट वन वाज द रिमूवल ऑफ द मिडिलमैन, सेकंड वन वाज द लैंड ओनरशिप, सीलिंग ऑन द लैंड ओनरशिप, एंड थर्ड वन वाज द protection of the tenants. And however, only some of its recommendations were implemented by the government. Not all recommendations were implemented. Government भी कैसे करे बोले तो हाफ हार्ट से करी, पूरा दिल से नहीं करे. They have done with a half heart only. थोड़े लोगों को देख के, थोड़े लोगों को छोड़ दे के करे थे land reforms implementation. Hyderabad has passed one famous tenancy act. The famous Hyderabad Tenancy Act was passed in the year 1950, protecting all type of tenants. All type of tenants बोले तो कल हम पढ़े थे tenants at will बोल के, tenants at will बोले तो who could be evicted at the will of the landlord. Landlord जब उस लोगों को निकाल देना चाह रहा, he can remove them. So such kind of tenants at will were also made protected tenants. They are also made as a protected tenants बताए थे उसको tenants at will. tenants बोले तो कौन है जी, किराएदार वाला, किराए को ले लेके ज़मीन किराए को ले लेके वो खेती बाड़ी करता, उसको टेनेंट्स एट विल बोलते. और इसको
जब चाहे तो उन लोगों को निकाल दे सकता। कौन? द लैंडलॉर्ड, द ओनर ऑफ द लैंड इज अ लैंडलॉर्ड, वो जब चाहे तो उन लोगों को निकाल दे सकते। मगर अब हैदराबाद टेनेंसी एक्ट 1950 में पास होने के बाद दे कम अंडर द प्रोटेक्टेड टेनेंट्स, दे कैन नॉट बी एविक्टेड, उसको निकाल दे नहीं सकते आप, प्रोटेक्टेड टेनेंट्स बन गए वो लोग, यू कैन नॉट एविक्ट देम, उन लोगों को निकाल नहीं दे सकते आप। एंड all the tenants who were in continuous possession of the land for a period of 6 years were made protected tenants, and they are called as pattadars after a little payment. They are even given the patta means ownership भी बन गए, वही लोग ओनर बन गए। कब? अगर आप 6 साल से ज़्यादा वो ज़मीन को खेती बाड़ी करें, इफ़ यू आर कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर मोर देन 6 years, then you are made as a pattadar, that means owner of the land also। कब? थोड़ा पेमेंट करे तो बस था। So now they could not be evicted easily, and they could continue to cultivate their land for generations. Similarly, the Hyderabad Inam Lands Abolition Act was also passed in 1955. So these are the Inam lands था। Inam बोले तो निज़ाम क्या करता था बोले तो he has donated some land as a gift to people, so that Inam land was also taken away. Okay, in 1955 the government has passed an act called as the Hyderabad Inam Lands Abolition Act. So those lands were also taken away by the government, और वो इनाम को जो भी दे दिए थे वो लैंड को ले लेके गवर्नमेंट ले लेके जिन लोगों के पास लैंड नहीं था पूरे लोगों को बांट दिया। इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड। And tomorrow we shall learn about the Bhudan movement, children, which is one of the most important movement in the land reforms. Thank you, children.